Okay, that linear equation in two variables. This is the easiest chapter of class 10. Now, suppose if I write 3x is equals to 2, then it is a linear equation because it will be 3x minus 2 is equals to 0. Okay, so it is of the form ax minus c is equals to 0. Actually, what is the funda is that, oh sorry, ax minus b, sorry, ax minus, now it is actually not of the form ax minus b, it is of the form ax plus b equals to 0, where a is 3 and b is minus 2. Okay, so that's why when I put a 3x, it will be b is minus 2 is equals to 0. Okay, so it is always of the form ax plus b is equals to 0. Now this is linear equation because the power is 1, and if you draw it in a graph you will get a straight line. But there is linear equation in two variable where we use ax plus by plus c is equals to 0. This is linear equation in two variables. Now when linear equation and two variables are given, our first thing is that we can find solution of this linear equation. But however, if there is ax plus b is equals to 0 and ax plus by plus c is equals to 0, this is linear equation in one variable, this is linear equation in two variable. Now the fact is this, you can just simply do x is equals to minus b by a and find out the value of x, and there will be only one value of x, and the value of x will be there. We can understand there can be one value of x because in polynomial we have studied that if there is power 1, then there will be only 1 0 or one value. But however, that we have learned in polynomials. But however, it is also linear equation in one variable only. This is also linear equation only. Okay, where the highest power is 1, but this is linear equation in two variable. Now what happens in case of two variable is that if we want to find out the value of x or y, we need another equation with it. We need two pairs of equation, a1x b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. We need two equations, two. Here being one equation we could solve it or find out the value of x. Here if we need to find out the value of x and y, or we need to find out the value of x and y, this x ka value and this x ka value are same, this y ka value are same. This is the same variable, this x and this x, and this is the same variable, this y and this y. The coefficients may be different, and with the same variables there are two different equations, and then we can find out the value of those. If suppose for example there is a equation ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Now this is also a linear equation but in three variables. Now to find out the value of x, y and z, if you write another one, suppose this is a1x, b1y, c1z and d1, you need a2x, b2y plus c2z plus d2 is equals to 0, and a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equals to 0. Means three pairs are required because there are three variables. But these all x ka value and y ka value will come, or one x ka value will come, one y ka value will come. There will not be multiple values. If it becomes a quadratic equation, then it becomes a multiple value. Suppose for example ax square plus bx plus c, as you learn in polynomials, this as because it is x square power 2, we get two values of x. Suppose if it would be ax square plus by square plus cx plus d, in that case you would get two values of x and two values of y because of the powers.
and then you would require two such equations also to find out. So always remember that whenever we say equation in one variable, there will be only one variable. Like linear equation in one variable is ax plus by plus c. Ax plus b is equals to 0. Quadratic equation, this is linear equation in one variable. Quadratic equation in one variable will be ax square plus bx plus c is equals to 0, and quadratic equation in two variable will be something like ax square plus by square plus a dot 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 in this way. And remember that as because it is linear equation, and linear equation in two variable will look like ax plus by plus c is equals to 0. Always remember, whenever we say linear, power will be 1 1, okay, or just 1 in case of one variable and two variable. One variable means one variable present, two variable means two variable present. If it is a quadratic equation, then power is 2, that's why it is quadratic. But if it is in one variable, there will be only x, and if there is two variable, there will be x square and y square, and according to that, number of the values of the answer will come. X will have two values, and here x will have two values, y will have two values. But here x will have only one value, here also x will have only one value, and y will have only one value. So I hope that you will never now confuse with the fact of what is a linear equation, quadratic equation, cubic equation, etc. thing. This just deals with power, and as many the highest power or highest degree, that many answers will come. But when they say about variables, they try to indicate the number of x, y or z, how many different variables are there in that particular equation. So both of them has no connection with each other. I hope that this is clear with you. Now, as I have made already clear, that if it is a linear equation in one variable, you can easily find out the answer x is equals to minus b by a. But if it is a linear equation in two variable, ax plus by plus c is equals to 0, you need another with it. Suppose if this one becomes a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, another will become a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, and then you can find out the value of x and y. And there are methods to do it. But I also mentioned that if there are three variables, x, y and z, then you need three equations to find out x, y and z. Don't forget that. So in our syllabus, we just have to do this. Two equations will be given to us, and we have to find out the answer. Now there are various methods to find out the answer. Number one is graphical method. Number two is substitution method. Number two is algebraic method. Now algebraic method can be divided into substitution, cross multiplication, and elimination. So these are the basic methods that we will learn turn by turn. Now this method is the easiest method. This method is the most popular method and the fastest method, and this method makes our calculation easier. Numerical calculation easier, reduces the task of doing a lot of much more direct method, I can say. This is a much more direct method. Directly answer will come at one go. Okay, so these are the difference of these three methods. Now when we learn this method, we'll understand. But before going into these algebraic methods, let me teach you the graphical method, because if you once know the graphical method, then you will be able to interpret your answers in a much more better way. Now, before that, we have to understand what is graph of equation. Now, when we understand graph of equation, suppose for example, let me begin with the very basic. Suppose for example, I have written 2x plus 3 is equals to 0, or maybe someone has given you minus 3 is equals to plus 2x, same thing. So it will be 2x
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 लाओ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। तो मैंने सबसे पहले सबसे बेसिक इक्वेशन, सबसे इजी इक्वेशन लिया है जिसमें एक ही वेरिएबल है। अब इसका बात मतलब ऐसा है कि अगर आपको ऐसे भी दिया जाए तो हमेशा इसको क्या करना होता है कि हम लोग अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में देखो, सबसे पहली बात तो मैं निश्चिंत करके ये बता सकता हूँ कि क्योंकि ये इक्वेशन का पावर 1 है, क्योंकि इस इक्वेशन का पावर या डिग्री 1 है, तो इसके वजह से क्या होता है, डिग्री 1 होने के वजह से इसका ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा। डिग्री 2 होने से कर्व लाइन आता है, जैसे कि पॉलिनोमियल में सीखे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व लाइन आता है, क्यूबिक इक्वेशन का कुछ ऐसा लाइन आता है, ठीक है। तो ये सब सीखे हो। वो मेन बात नहीं है। मेन बात ये है कि डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मैं एल्जेब्रिकली, इसका तो एल्जेब्रिक बहुत इजी है ना, x इजिकल्स टू -3/2 लिख देने से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है या ये ज़ीरो है। इसका मतलब ये लाइन जब तुम ड्रॉ करोगे 2x + 3, ये लाइन ना जाके इस पॉइंट में मीट करेगा, जो सॉरी नॉट इस पॉइंट में, ग्राफ में थोड़ा गलती हो गया, ऐसा एक पॉइंट में मीट करेगा जो -3/2 है इस जगह में, क्योंकि x का वैल्यू जब -3/2 है तब y इजिकल्स टू 0 है। मैं ये एक चीज़ बताना यहाँ भूल गया, जब भी आपको ऐसे एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो आप लोग 9 में सीखे हो, आप उसको y इजिकल्स टू 2x + 3 पकड़ते हो। क्या पकड़ते हो, y इजिकल्स टू 2x + 3। जब आप y इक्वल्स टू 2x + 3 पकड़ते हो तो y कब 0 होगा, y इक्वल्स टू जब 0 लेना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, दैट इक्वल्स टू 0 लिखोगे ना। अब अभी मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 लिखना चाहिए, यही रीज़न है क्योंकि राइट हैंड साइड में क्यों 0 निकला चाहिए, क्योंकि हम 0 की तलाश में हैं या फिर x का ऐसा वैल्यू की तलाश में है जो यहाँ पे बैठाने से पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। यानी पूरा इक्वेशन को अगर मैं y पकड़ूँ तो y कब 0 होगा, y 0 होगा जब x -3/2 होता है, जो ऊपर एल्जेब्रिकली हमको पता चला है। तो यानी x क्या होगा, x का जब आप लाइन खींचोगे, अब यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि लाइन 2 कैसे खींचूँ। लाइन खींचना एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्या होता है, अगर आपने y इजिकल्स टू 2x + 3 लिखा हुआ है तो आप एक ग्राफ बनाने के लिए जस्ट उसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9 में सब ने सीखा होगा। तो अगर आप x को 1 पकड़ते हो तो y कितना होता है, 5। x को अगर 2 पकड़ते हो तो y हो जाता है 7। x को अगर 3 पकड़ते हो तो y हो जाता है 9, और x को अगर 1 पकड़ते हो तो -1 पकड़ते हो तो y हो जाता है 1। तो आपको 4 वैल्यू मिल गया। तो आपका कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होता है, राइट। कार्टेशियन प्लेन में आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा x, y होता है। तो x, y कोऑर्डिनेट है, मतलब 1,5 पहला पॉइंट है, 2,7 सेकेंड पॉइंट है, 3,9 थर्ड पॉइंट है, -1,1 फोर्थ पॉइंट है। इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करो और मिला दो। तो ये एक ऐसा लाइन है जो इस इक्वेशन को डिपिक्ट करता है, या इस इक्वेशन का ये लाइन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब। ये पॉलिनोमियल में भी तुम लोगों ने देखा है, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब। अब बात कुछ ऐसा है कि देखो यहाँ पे तो तुम बोलोगे कि इसको 2 वेरिएबल में सर अपने चालाकी करके लिख ही लिया है, वो सही बात है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था कि ग्राफिकल कैसा होता है, और y जब 0 होगा तब x का वैल्यू होता है -3/2, जो मैंने चालाकी से एल्जेब्रिकली निकाल दिया, 2x + 3 इजिकल्स टू 0 करके x इजिकल्स टू -3/2 लिख दिया। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हो कि आपने एक बार अगर इस मेथड से चारों पॉइंट को इस्तेमाल करके अगर आपने स्ट्रेट लाइन खींच भी दिया तो वहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा जिस जगह में, वो जगह आपको ऑटोमेटिकली -3/2 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x के ऊपर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है और y के ऊपर x का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है। तो x में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 0 ढूंढ सकते हैं। ये एक बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन तो हो सकता है, लेकिन एक इक्वेशन का 0 अगर निकालोगे भी तो वो हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे। अगर तो यहाँ पे मैंने चालाकी करके इसको 2 वेरिएबल में लिखा है। अगर आपको कोई अभी एक 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन देगा भी, 3x + 2y + 7 = 0, सपोज आपने दिया,
तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3x बाई 2। तो आप यहाँ पे आराम से x और y का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, राइट? x और y का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और कहाँ पे y 0 होगा वो ग्राफ प्लॉट करके आराम से जैसे मैंने बताया है वैसा लिख सकते हो आराम से, ठीक है? आप यहाँ पे 1 बैठाओ तो 7 माइनस 3 आपका हो जाएगा 4/2, तो 2, तो 1 बैठा x को 1 बैठाने से ये 2, और क्योंकि इसका वैल्यू बार बार चेंज करके इसका वैल्यू निकाल रहे हो तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वेरिएबल का वैल्यू सिलेक्ट किया है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? ये सब बातें दिमाग में घुसाना और नोट कर रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हायर क्लासेस में ज़रूरत होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो हालांकि मैं अगर x का वैल्यू 2 सिलेक्ट करूँ तो 3 2 6, और x का वैल्यू 2 सिलेक्ट करने से y का वैल्यू हाफ आएगा। हालांकि आप हाफ तो लोगे नहीं, लेकिन ये इनवैलिड वैल्यू भी नहीं है। हाफ इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं क्लास 9 में करते हुए क्योंकि कहाँ प्लॉट करोगे, इसलिए हम लोग होल नंबर्स ढूंढते थे। लेकिन आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो और उसको लेके उसको पॉइंट प्लॉट कर दे सकते हो। जब एक बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा x में जहाँ पे वो मीट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में वो लाइन, ये लाइन तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को डिपिक्ट करता है कि ये वाला लाइन, ऐसे देखना बुक में पिक्चर में क्या करता है, लाइन के साइड में 3x + 2y + 7 ऐसे लिख देता है। तो आप लोग बुक में देखना कि ऐसे लाइन होता है तो उस लाइन में हम लोग ऐसे लाइन के साइड में इक्वेशन लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस इक्वेशन से आया हुआ है, राइट? इसको और समझाने की आई होप की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ और एक बार, 2x + 3y + 9 = 0, ये सोचो एक लीनियर इक्वेशन है, या फिर मैं हमेशा प्लस लिए जा रहा हूँ, दूसरा कुछ लेता हूँ, 3x - 2y - 7 = 0। अगर आपको इक्वेशन कुछ दूसरे फॉर्म में दिया भी गया तो आपको इस इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो अलग बात है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको y को एक साइड में लेना पड़ता है ग्राफ का वैल्यू निकालने के लिए, और फिर 2y ऐसे हम लोग बना लिए, ठीक है? तब हम लोग x 2 नीचे होगा तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं और ये बनाते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं आराम से। ये सॉरी थोड़ा ये हो गया, y एक्सिस तो को ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये 3x - 2y - 7 का ग्राफ है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बहुत डीप है एक्चुअली, मतलब सबको समझ में नहीं आता यहाँ पे। जब भी एक कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ में आपको कोई लाइन मिलता है, आपको कोई लाइन मिलता है ऐसे, तो याद रखना उस लाइन का जो इक्वेशन है, कुछ भी इक्वेशन 2x + 3y + 9 = 0, इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल्स हैं। हाँ, x और y वेरिएबल्स है। x, y मिल के बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स बनाते हैं, और जितने भी पॉइंट्स x के जिसके लिए पॉइंट y होगा, यहाँ पे वैल्यू बैठाते हो ना आप, दूसरा वैल्यू निकालते हो, हर एक वैल्यू ऑफ x एंड y एक कोऑर्डिनेट है, और हर एक कोऑर्डिनेट इस लाइन पे है। तो अब बोलोगे सर वो तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x हो सकता है, इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। हियर I cannot stop putting numbers, I can put infinite numbers to x to find infinite numbers of y. But however, line also contains infinite points, and those each of these points, infinite points, will have infinite will have the coordinates which will actually fit this equation, and only this equation, because this line represents this equation. There can be another line on a graph and this may have a different equation, and this equation will be satisfied by the coordinates of the points present in this line, but not this one. So I will repeat again just to make you understand that suppose if there is a line in a Cartesian plane,
then this line has an equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and each values of x comma y are the coordinates of infinite numbers of points that are there in this line. And if there is another line, then this line also has its own unique equation whose x comma y ka infinite numbers of values are coordinates of the points lying on this line, not outside this line, not any point on this line, but this line. But here you can see that the 2 points have intersected, and 2 lines intersect only at a single point. So the coordinates of this point, suppose k comma l are the coordinates of this point, this value of x will also satisfy this equation and this equation, and this value of x will satisfy this equation and this equation both. Means the pair x comma y of the intersected point lies in this equation also, because if the point lies in this line also, lies in this equation also, because the point lies in this one also. Then we say that this is the solution of these 2 equations. That is the what I was saying, we need 2 equations to find out the value of x and y, because independent values of x and y will not be solutions. And the term known as 0 of the equation is just the value of x, where the value of y becomes 0. But solution of 2 simultaneous equation is that point where 2 lines of those equation intersect. I will repeat again. One equation cannot have a solution. a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 cannot have a solution, because the x and y will form infinite pair of points, an infinite pair of coordinates lying on that line, which it represents on the graph paper. And in this equation, 0 of the equation means value of x, where value of y becomes 0. So that means it is the point where the line meets the x-axis. That is also not, that is a different kind of solution of 0. But when they say solution of 2 simultaneous linear equation, a1x plus b1y plus c2 is equals to 0, or a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, if you get, okay, then simultaneous solution of x and y will be that point where they intersect. I hope I could understand the fine line of difference between the 3, that what is the 0 of a equation and what is the simultaneous solution of 2 simultaneous linear equation, and what do you mean by a linear equation. If this is clear, then this chapter is almost over. So we can say that if there is a equation 3x plus 4y minus 7 is equals to 0, and there is another independent equation, remember both are independent, minus 2x plus bx plus 7x minus 5 is equals to 0. Suppose these 2 are the equations. This will also have a line, this will also have a line, but when this will become simultaneous equations, both the lines will intersect at a particular point. Then the coordinates of this point x and y are the solutions of these 2 equations. Now how can you find it graphically? It's simple. Just find out this table for x and y, like the way we used to do in class 9, or has been given as example in your this particular thing video. And another thing is that you draw for this also independently. So independently you can find this one also, and you will find the coordinates x comma y, x y comma x comma y, x comma y, and draw this line and this line. Wherever they will intersect, you will get the answer. So that is the way to graphically find out. Okay, so I hope that you understand. But there can be 3 situations graphically. 3 situations. Because if 2 equations are given, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, if 2 equations are given, it can be so that if you draw a line, okay, and if you draw another line, they will intersect at a point, then we say that these 2 equations have one solution.
but there can be a possibility that these two lines runs parallel to each other. Then we say that the pair of equations have no solution because they are not intersecting at all. And it can be so that if we draw two lines and one line comes over the another line, means they are concurrent lines, not concurrent, sorry, coinciding lines. Coinciding lines means one line at the top of another line, and in that case we say they have infinitely many solutions because they have not intersected actually, but infinitely many coordinates, or all the coordinates are in common to each other. Actually solution is what? When the coordinate is common to both the line, in this case infinitely many coordinates are common to both the lines from the two different equations. So I hope that there is infinitely many solution. You understand what is the diagrammatic representation of this. Now you can ask me a question that when this will come, when this will come, and when this will come. That depends on the values of a1, a2, b1, b2, c1, c2, that what your equation is. Suppose you have a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, then definitely if algebraically if you see that a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then understand that it is having infinitely many solutions. And if you happen to get a1 by a2 is equals to b1 by b2 but is not equals to c1 by c2, then you have to understand that it has no solution. That means the lines will be parallel, and that means the lines will be coinciding. And if you get a1 by a2 not equals to b1 by b2, no need to see for c1 by c2, then they will have unique solution or one solution. Okay, one value of x and y will come where the lines will intersect at a particular point. So it will be intersecting lines. Intersecting lines. So that is what it is. So even if you don't want to draw the graph of these two equations and find out whether the graph will come like this, or like this, then you can simply do a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 and find out. However, sometimes question will also be given. When we will practice, we will see that when they will say infinitely many solution, and here in place of the, suppose you will be given equations like this: 3x plus 4y plus 7 is equals to 0, 8x plus 3y plus 9 is equals to 5 is equals to 0 maybe. So you can do 3 by 8, 4 by 3, 7 by 9 to know what category it falls in. That can be a question, but this can also be a question. Suppose they have given you 3x plus ky plus 7 is equals to 0, 8x plus 6y plus k is equals to 7. Find the value of k if they have infinitely many solution. So you put the values here and find out the value of k. You put if they say no solution, put the value and find out the value. Okay, so this type of questions can be given. They will mention the condition in that case. Okay, and I hope that you have understood. And I hope that you have understood how to find out graphically. Graphically, you just have to draw the graph and see where they intersect. So that is the completion of the discussion. So that is the idea of linear equation. And I hope that the idea of the linear equation is very clear in your minds. I will ask everyone to make a note of this entire thing and see this video more than once to understand the things, to interpret the things, and if there is any difficulty or there is anything, to let me know.